धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। He comes from a lineage of great sages, yogis, and saints from India. He began his spiritual journey at the age of 7 and was fully realized by the age of 14. During this time, he delved into different practices and acquired mastery over Tantra, Mantra, Yantra, Aghori practices, and Yaksha sadhana. He was a siddha and many masters, saints, and sages used to visit him in solitude to gain wisdom and guidance from him since the tender age. Although he has been helping humanity since childhood, he never disclosed this part of him to the world, and only the advanced yogis and masters were aware of his divine presence. Only in the last 2 years he chose few people from the world and started guiding them in their spiritual paths, and those who have been closely associated with him have witnessed many miracles in his presence. Despite being a family person, he is a yogi and intends to help people entangled in this world achieve Jivan Mukti, liberation while being alive. He is truly in the world but not of the world, and if you really want to understand him, look him beyond his physical appearance and just sit with him and you will never be the same again. In his presence you will transcend your body and mind and experience the state of Sat, absolute truth, Chit, pure consciousness, Ananda, eternal bliss. Let us fold our hands in front of his divinity and with a heart filled with gratitude and love welcome our spiritual guru, the realized soul, and our enlightened master, Guru Meenakshi Mishra.
ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ धरा शान्तिः गगन शान्तिः अंतरिक्ष शान्तिः सर्वं शान्तिः। अहं ब्रह्मास्मि। So good evening everyone, and good morning and good afternoon for all the people from the other time zones that are here today. स्वागत है आप सभी का to this after a little break after the Shara, I believe so. I missed you, so hopefully the same from the other side. So whatever it is, so here we are, and to our favorite Q&A session. So anybody has any questions for this day, or you just came to see me? I don't know. So if you don't have any questions, that means you just came to see me. And good. So people are raising their hands. That means I have some work left on this planet. Good to see that. अभी भी थोड़ा कार्य बाकी है. So yeah, Janisha ji, please go to sir. प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम जनेश जी, कैसे हो? बस बहुत बढ़िया गुरुदेव, आपकी कृपा है। हाँ जी। गुरुदेव खाली वो एक चक्रों के चक्कर में थोड़ा कंफ्यूजन था, इसके लिए प्रश्न पूछ रहा हूँ। ओके। वो जब भी हमने नवरात्र की साधना की तो आपने कहा था कि अपना मणिपुर है वो नाभि के ऊपर 4 उंगली पे मणिपुर है, और कई कई रेफरेंस अभी तक कई जगह पे जब सीखा तो सब लोग वही नाभि का बिंदु बताता है। तो एक्चुअली नाभि चक्र अलग है, मणिपुर अलग है, या इसमें कुछ समन्वय है या क्या है, वो मुझे थोड़ा अगर प्रकाश डाले तो। ओके। सो व्हेन आप जो नाभि जिसे कहते हो, इट इज नॉट एग्जैक्टली द पोजीशन ऑफ इट। वो एकदम से वहां वो चक्र नहीं है वो। ऑल्दो फॉर रेफरेंस, जिसको रास्ता नहीं पता उसको एक मैप दिखाया जाता है। ओके। सो अप अंटिल एंड अनलेस इट अवेकन्स विद इन यू, आपके अंदर जब तक जागृत नहीं होता तब तक आपको कोई तो रेफरेंस पॉइंट चाहिए ना। इफ आई वांट टू ट्रैवल फ्रॉम हियर टू समवेयर, सो दे शो मी ए मैप। और मैप इतना छोटा सा होता है, बट हाउ मच टाइम डज इट टेक टू ट्रैवल दैट मच? सही है, राइट? सही है। So a reference point is given so that at least you know where to focus. Okay. So वो focus जब वहां पे आता है, but what happens is continuous focus and chanting of that बीज mantra of that chakra. What happens? Slowly it starts to activate itself. वो अपने आप को प्रकट करना शुरू करता है. And then you absolutely realize where it exactly is. अगर मैं आपको बताऊं, if I have to tell you, like if I say the chakras that you feel like they are within your body, they are not within your body, then yeah, that's true. So what will you do then? Then you will be looking back. आप पीछे मुड़ के देखोगे कहाँ पे है. You will be standing in front of a mirror, trying to see where is my chakras there. No, you don't find that way. क्योंकि आपके जो शरीर हैं, एक भौतिक शरीर है, अन्नमय कोश जो है, okay?
So in order to give a reference from the Annamaya Kosh, ये सारे जगह बताए जाते हैं, right? However, it can be to experience it at a physical level, वैसा ही बताना पड़ेगा. But in order to really activate it and experience it at an energy level, it is not really available in this body, but in your प्राणमय कोश में है. Some people also you might have seen, वो कहते हैं कि आपके जो स्पाइन है उसके ऊपर चक्र स्थित है, right? So ऊर्जा, जैसे हमने बात की, एनर्जी, एक होता है प्राणवायु और एक होता है श्वास, राइट? आपको याद है हम जब विज्ञान भैरव तंत्र कर रहे थे, at a time I said like you should start breathing from your third eye level, not from your nose. You remember that? Yes. Why was it said that way? Because जो वायु, जो प्राण वायु जो चलता है, जो रेगुलर हम लेते हैं, और जो ऊर्जा प्रदान करने वाली जो प्राण है, उसकी स्थिति बहुत अलग है. मैंने आपको यहाँ पे बताया क्योंकि you will be very very clear where to focus on. However, if you really ask me where to focus, it's not the space. Correct. That space moves to back. पीछे चला जाता है वो. And when you focus from here, actually if you see, जो पंडित चोटी रखते थे, what was the reason? वो बिंदु है, चंद्र एक है, बिंदु एक है. आपने हमारे अक्षरों में भी देखा, in our alphabets you might have seen there is a alphabet known as Chandra Bindu. It is available even in the Om also. Chandra और बिंदु क्या है? Chandra means what? What reflects. Bindu means what? From the starting point. Bindu क्या है? Any center, anything that starts from somewhere, it has a point where it starts. So इसे बिंदु कहा जाता है. और चंद्र जो है हमारे स्पाइनल कॉर्ड के नीचे, जहां पे आप मूलाधार चक्र जिसे कहते हो. So when this life force enters and goes there and touches it, ये देखो ये बिल्कुल उल्टा है. This is a travel of from Shiva towards Shakti. Okay. Right? But what we have to do, we have to reverse that mechanism from down to up. Right? तो ये सारे चीजों को जब हम व्याख्या करते हैं, when we go in depth in that, it is not exactly within the body. हम नाड़ियों को लेके हम चक्र समझते हैं और वैसे ही समझाया जाता है. Because those are also energy points where a lot of nerves are connecting together, and because they're connecting, there is a energy force. And that's why in a physical form, in order to understand the chakras, नाड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है. And then, but if you go into a energy field, then even you don't seek into this body. Many a times, Janeji, even we have told, like when we are doing this activation processes, how many times I have told you, like, okay, now look as if your body is sitting there. आप शरीर से बाहर हो. How many of you experienced that? You did. How do you know, like, you are not in that body and somebody, you are watching your body? Is it an imagination? No, it cannot be, because when you are seeing it, you know what it is doing right now. वो अभी क्या कर रहा है आपको दिखाई दे रहा है. सही है. And if you want, you can actually take a 360-degree view of your own body, which is not possible physically. Right? So ये क्या होता है? That's where we are talking about a differential space of physicality. At one level you experience it, then at a metaphysical level you experience it, then at a spiritual level you experience it. Now what is the difference between this metaphysical and spiritual? Metaphysical is something that is not physical, but spiritual is beyond that also. तो आप जिस तरीके से पूछते हो, shall we focus on the navel area? It is a very good point to focus on, because if you remember in our childhood, like when we were an infant in the womb of the mother, what connected us? Navel. The same thing, right? Apart from that, have you seen from Shiva's Navi, the flower comes, in that you might have seen Vishnu is sitting, and then in Vishnu you might have seen an
lotus is coming, and in that Brahma is sitting, right? What is the importance of that? Have you ever thought कि ऐसा क्यों होता है, नाभि से कमल निकला और कमल के ऊपर कोई बैठा है? What does that indicate? There is a beautiful indication there what we never understood. कोई ना बताएगा ना आप कोई भी समझ पाओगे. Now what is the importance of lotus? It comes out from the clay, mud, और जो पूरा कीचड़ है उससे निकलता है ना, इसीलिए कमल कहते हैं उसे. It goes out and blooms beyond that. वही कचरे में कीड़े बनते हैं और वही कचरे में कमल बनता है. कमल कौन? The one who has transcended. He didn't just lie there. और वो अपने आप को ऊपर उठा देता है. इतना ऊपर ये कीचड़ छू नहीं सकता उसे. What does that mean? You look at your belly now, belly button. When you were in the womb of the mother, was it a very good place? No, it wasn't. If you think that way, you are put into a bowl of water, which is always heated up, and then all that is filled up in the belly. What did you notice? वो कुछ अच्छा स्थान नहीं होता है ऐसा भी. अगर आपको अभी ऐसे जगह पर डाल दिया जाए, will you be happy? You'll be miserable. But did you realize what that showed? That showed that from this place also, अगर ये कीचड़ भी है, a place which is not that good, the one who comes out of it has the possibility to become Shiva, has the possibility to become Brahma, has the possibility to become Vishnu. कभी सोचते हैं हम इस बारे में? Have we ever even thought why it is shown that from that navel point a cord जुड़ा हुआ है ना उसमें? There is a cord that is attached. That's how the flower is up. And what it is becoming, it is not only becoming flower, it is becoming a seat on which all the gods can sit. अगर आप अपने अंदर की उस ऊर्जा को उस तरीके से आप खिला सको, means वहीं से निकल रहा है ना. And that's how you bloom, and the Brahman will appear in that. But Guruji, when I had in past in one of the experience, Okay. when I was taken, it was a dhyan through Okay. which I was supposed to go and regress myself, Okay. to experience myself in mother's womb and at the time of birth and everything. Okay. When तो ऐसा एकदम स्मूथ ट्रांजिशन नहीं था, ऐसा टुकड़े टुकड़े में आया सब चीजें. Okay. इवन बचपन का जस्ट बिफोर द बर्थ एंड एवरीथिंग टुकड़े टुकड़े में आया. बट व्हेन आई वाज इनसाइड माय मदर्स वूम, Okay. I could distinguish that I have suddenly woken up inside, and I was feeling my limbs and I was feeling myself, and I was just trying to wonder Okay. that wow, and I don't know how to express this in words, but it was like, say that I was just found out that I'm here, and then I used to move my hand in the water and everything. I mean, it was beautiful. No doubt about Should it. be. So now, But feeling was beautiful okay. in the sense, कई बार हमारा संस्कारों में बताया जाता है ना कि गर्भ संस्कार करने चाहिए क्योंकि अंदर बच्चा जिंदा है, उसको समझता है वगैरह. So there were two incidents where I was absolutely flabbergasted and shattered and everything inside the womb. Okay. After years, I came to know while conversation that such and such incident had happened when she was pregnant with me. But I could not correlate. When this experience happened, at that time, I could correlate. Wow. So it seems that हम चाहे कितनी बात कर ले, लेकिन जब तक हम वो experience नहीं करते, as you have rightly said,
तब तक सारी चीजें ज्ञान है सिर्फ, बस। Now, if a child has to earn money in his life, what is the first thing that he has to have? बच्चे को क्या करते हो, कहाँ भेजते हो? स्कूल भेजते हो ना? हाँ। Without going to the school, can he earn money? Yes. He can. But Yes. what about the skills? Even that? Without any skills, will you hire anyone? No. Is there anyone without any skills? No. So ये जो स्किल है या जो पढ़ाई है, what is this? This is the ज्ञान. वो क्यों? क्योंकि संसार में रहना है. So जो ज्ञान आपको दिया जाता है, वो ज्ञान ही आपका मार्ग दिखाता है कि okay, this is where you have to go. Or else many a times what happens is just a day ago someone posted something and another person sent me that and asked me how true is it, whatever it has been written, because it has given an indication about the levels of spirituality kind of stuff. Mm-hmm. And then some people, when they read that, and they say, I am nowhere in this list, so where am I? मैं तो लिस्ट में ही नहीं हूं, तो आज तक मैं क्या किया? Like, what was I doing? Then I asked, like, who is the writer of that? Do you know it? Does it come from a authenticate or from a sage or from our Puranas or anywhere? No. Is it written the name who has written that? They said no. I said, then be very careful with the University of WhatsApp. Why? Because nowadays you might have seen, even on any platform, there are many things that are written. However, Janesh ji, kya ho raha hai? This is not coming from any of our references. It is coming from the content writers. Correct. And content writers are writing such thing that will allure you. True. That will pull you towards that. Then how do you really know what is written is authenticate, or it just written from taking many things from many places and making one more story about it? यहाँ पे ज्ञान की जरूरत होती है फिर, so that you know what is knowledge, what is wisdom, क्या ज्ञान है, क्या विज्ञान है, और क्या सिर्फ बातों का खान है. That's how I can speak. लेकिन गुरुजी एक चीज ये भी, सॉरी, लेकिन अभी मैं मेरा प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन जो है वो बात बताऊं. ओके. जो दिन बर दिन हम देखते हैं, मतलब मैंने भी अनुभव किया है, ऐसा नहीं कि नहीं किया है. एक काल था जिसमें मैंने अनुभव किया है. तो ऐसा है कि सारा चीज भाव है. ओके. और चाहे हम कुछ ज्ञान से भाव उत्पन्न होता है या विज्ञान से उत्पन्न होता है, जो भी होता है, जब तक भाव उत्पन्न नहीं होता है कोई चीज पॉसिबल नहीं है. लेकिन जो भाव है वो अगर अज्ञानता में उत्पन्न होता है तो वो भाव की जो पात्रता है वो कभी कभी हमको हर्ट करती है. और ज्ञान के बाद अगर हमारा भाव उत्पन्न होता है तो हम वो भाव को अच्छी तरह से संजो के उसको प्रवाहित कर सकते, प्रतिपादित होता है. yes. तो जब अगर ऐसा लगे किसी को, या मतलब ऐसा लगे कि अभी जो भी है, अगर देव मेरे में है और देव के सिवा कुछ होता ही नहीं है, तो देव ने अगर एक भाव जनरेट किया है तो भाव सच्चा ही है ना, उसमें बुरा क्या है. अगर यही चीज से अगर आदमी सोचेगा तो वो ज्ञान अर्चित कब करेगा, उसका उत्थापन कब होगा और उसका उत्कर्ष कब होगा. क्योंकि आत्म उत्कर्ष के लिए ज्ञान का मतलब विज्ञान का ज्ञान के अंदर अपने अंदर समा के उसमें से एक क्या बोलते, उसका एक एनर्जी होनी चाहिए. जब तक वो नहीं होती है हम उससे वंचित रह ही जाते हैं. ओके.
तो ये क्यों होता है? हम क्यों ऐसे भटक जाते हैं? मतलब होता है, फिर अलर्टनेस से वापस आ जाते हैं, ये अपनी जगह है, लेकिन आज आप आते हैं, एक काल था जब भी हमारे पास ये अलर्टनेस से वापस जाना चाहिए, वो भी नहीं समझती, तो उसमें इन्वॉल्व होते ही गए, होते ही गए, वो भी हुआ है। ओके ओके, सो अगर एक लाइन में आपको सवाल पूछना है तो क्या आंसर दूं आपको? एक बार सवाल मुझे पूछिए और मैं उसका बहुत सीधा आंसर देना चाहता हूं। कि गुरुजी, अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भाव है वो देव ने दिया है, तो सारे मेरे जो भावना है वो सही है, मुझे किसी भी भावना के बारे में कोई सोचना ही नहीं है। वेरी गुड। इसलिए मैं आपको एक चीज पूछना चाहूंगा। हम जब कहते हैं कि सारी भावनाएं हमारे अंदर जो है वो भी दिव्यता के ही दिए हुए हैं, एंड ऑल द थॉट्स दैट आई हैव इज ऑल डिवाइन, देन व्हाई आई शुड बी वरीड अबाउट एनी थॉट्स, राइट? ओके, और फीलिंग्स। एक से उसी दिव्यता ने आपके अंदर कुछ ऐसा भी दिया है जो जानता है कि ये अच्छा विचार या बुरा विचार है, whether it is a right thought or a wrong thought, it has also given you that idea. Then why do you discard that? उसको डिस्काउंट क्यों कर देते हैं हम? Now either you accept everything as is, जैसे कृष्ण के जन्म के टाइम पे हुआ था, right? I was talking to Sudhaji today, so I remember one thing came up while talking to her. When Krishna took birth, और वासुदेव जब उनको लेके जाने वाले थे ना वहां से, फ्रॉम दैट कारागार से उनको लेके जाने वाले थे ना, सो विष्णु अपीयर्स एंड ही सेज नाउ यू हैव टू टेक हिम। ही सेज बट हाउ कैन आई गो? मैं जाऊं कैसे? ऑल माय हैंड्स एंड लेग्स आर चेन्ड एंड एवरीथिंग इज देयर इज पहरे लगे हुए, जाऊं तो कैसे जाऊं? हाउ कैन आई गो? एंड देन सेज यू हैव टू गो। ही सेज हाउ? ही सेड जस्ट डू वन थिंग, कीप हिम ऑन हिज हेड, ऑन योर हेड, उसे उठा के अपने सर पे रख लो और चलना शुरू करो। Just keep it on your head and you start walking and you see what happens. And we all know what happened. एक ही बात है जनेश जी, जब उसको उसने सर के ऊपर रख दिया ना, बाकी सारे बंधन टूट गए। So that is भक्ति। जब आप उसने क्या कहा, मेरे विचार में क्या है, ये सब नहीं, आप अगर उसको अपने सर के ऊपर बिठा के रखे, एवरीथिंग दैट इज ही ओनली और वॉट एवर यू कॉल इट, यही है, then he will ensure you are not entangled in dilemma, not entangled in worldly things, not entangled in worries. हमने विठला जी का भी स्टोरी सुना होगा, लाइक वो तो इतने मग्न हो गए थे कि अपने बच्चे को रौंद दिए, राइट? यही हुआ था ना। विदाउट हिज नॉलेज ही स्टैम्प्ड हिज ओन इन्फेंट किड, छोटा से बच्चे को। बट व्हाट हैपेंड नेक्स्ट? What was the thing? What was he thinking while he was doing that also? वो कृत्य करते हुए भी वो कृत्य में नहीं थे, वो उसके ध्यान में थे। आप कृत्य करते हुए कहां पे रहते हो? आप कृत्य करते हुए मुनाफा और क्षति देखते हो। whenever you are doing a work, you are busy tallying whether this is a profitable thing or a not profitable thing for me. Your thoughts are not there with him, and if your thoughts are there with him, there is no way to even question what I did is right or not. Who is thinking and judging what you did right or wrong? Means you are not there, you are here only. आपका ध्यान उसमें है ही नहीं। अगर उसमें होता तो सवाल कौन पूछेगा? और अगर उसके ध्यान में हो तो बुरा कर सकते हो क्या? If you are already in it, how can you do something wrong? And even something happened through you that will have a very great blessing in itself. उसके अंदर कोई ना कोई एक वरदान छुपा होगा। That's where we talk about spirituality. Not questioning it again. But if I'm questioning, that means I know I'm not doing right. I know I'm not doing wrong. मेरे अंदर ही आ जाता है ना वो, अरे मैंने, oh, why I'm thinking this? That means I'm here right now. So what you have to do? Again shift it back. कहाँ पे? Again to the same source. If this has come from you,
You know it better. Kyunki, can you move your hands without his permission? Can you breathe without his permission? And then all that you can do is you can absolutely surrender it to it. And I can say one thing for sure. Experience also made people experience of it. If you can just connect with that source for a moment and absolutely give yourself away, I can guarantee there it cannot be that you will not experience that divinity right away. ऐसा हो ही नहीं सकता. In that moment, if you are giving it for a moment, you will experience for it a moment. And if you give it for eternity, you will experience it for eternity. कितने देर के लिए देते हो? For how long do you give? नहीं, हम क्या करते हैं? हम लेके जाते हैं चवन्नी और कहते हैं सोना खरीदना है. हो नहीं सकता. अरे, if you really want that divine, you should also be ready to create that space for it. Or else he says you are free to do whatever you want to do. Go. I have given you powers and now also have given you that wisdom and that knowledge, something called as a brain. Now think what you want to do. You want to enjoy into this world? Go enjoy your world. But what will happen? You will always be entangled in this part. But if you have focused on me, then it has to take care of you. Now the question comes, how to surrender? Very amazing question, how to surrender. How do you know you are hungry? भूख लगे तो पता चल जाता है. That means the day you have that kind of hunger, you will not even ask this question. Because when you are hungry, nobody comes and tells you, are you hungry? You already say, I am. किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती. Kamlendra ji, you remember that I said, no, that kid was going to sleep and he said to his mother, please wake me up when I'm hungry. The mother laughed and said, I don't have to wake you up. Your hunger will wake you up. So that question that you're asking for surrendering, I ask, how do you surrender to money? Without question, you devote your entire life towards that. How did you do that? That means you are surrendering to the money, considering what all it can give to you. If you have a 100 rupee note, you can go and enjoy that 100 rupee. That's why you say, oh, this is a tangible thing. So here you have to think again. If you are lost in the tangible things, how are you thinking even about the intangible? हमारा ध्यान tangible पे है, लेकिन चाहते intangible को हो. ये कैसे होगा? So we are trying to somehow fool ourselves. किसी और को नहीं, हम अपने आप को ही कर दे रहे. इसे ही मूर्खता कहते हैं, इसे ही अज्ञानता कहते हैं. So what you should do? मुक्त, विमुक्त, दो शब्द हैं. एक है मुक्त, दूसरा है विमुक्त. जैसे हमने कहा था कि when Shiva is sitting out there, he has closed his eyes, but he is seeing everything. Means वो मुक्त है संसार से, he is free from the world, but not given up on the world. विमुक्त मतलब to give up. He has not given up. And Kamlendra ji, many a times we have given on ourselves only. मेरे से नहीं हो पाएगा. How can a person like me, God can consider me
this question itself should be questioned on you. How did you even question that? Because if he has not accepted you, how are you on this planet? आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? आए कैसे यहाँ पे अगर उसने नहीं चाहा तो? So that means the question itself is wrong. So how to surrender? Now just try to close your nose and stop breathing for some time. Let's see if you will surrender to air or not. You will. Why? Because you are always in the physicality. आप उसको भी इसी के जरिए एक्सपीरियंस करना चाहते हो. I don't deny that. It's possible, but it will never come directly as a physical experience to you. It will showcase itself in some or other way. And many of you, what all you experienced during these 9 days? Have you experienced all that what I said or not? How? Did I come to your home to do that? No. It is you who were so well connected to it that it has to listen to your voice. And you were so listening that you heard their voice. You were so sensitive in that moment that you felt their touch. You were so aware that you felt them moving in your houses. Why not? Why not? Lekin we have to check. हमारा, you know, a big ship, अश्विन जी, एक बड़ा सा जहाज है. But you use one thing to hook it to the shore. क्या कहते हैं उसे? Anchor ना? इतना बड़ा जहाज, such a big ship, but there is one thing called as an anchor, and they put it there, and the ship stops moving. Yes or no? Where have you put your anchor? आपने कहाँ डाल रखा है? जहाज में ताकत है. The ship has enough power to cross over oceans after oceans, but the anchor. Similarly, you have the power to cross over all this life journey, but where have you kept your anchor? You're staying there. What we do? Our anchor is put into physicality. Our anchor is put into our wealth. Our anchor is put into our houses. Our anchor is put into our relationship. Our anchor. Where all? एक होता तो भी बंद हो जाता है. Even one anchor is enough to stop it, and you have pulled down many. So those are actually not stopping you, they are pulling you down. So what is the thought process here? We have to first and foremostly see where I'm stuck. क्यों रुका पड़ा हूं? So how do you know that? These, in order to know all these things, ये ज्ञान की जरूरी है. You have to know that, you have to have that knowledge to know, okay, there is something called as an anchor because of which it is stopped. And one more amazing thing. How many of you have seen or gone into a ship? Any one of you? Okay, so if you have gone, if you go to the motor room where the entire mechanism is there, there is also one button. When they press that, there is a mechanism that starts rolling it. And when it starts rolling it, what happens? The anchor slowly comes up. That is the same anchor that has stopped the ship, and now the ship carries that anchor along with it. Do you see the power of that? It is about where the focus has been kept. The focus has been given to the anchor, so the anchor holds the ship. Now the focus has been kept on the ship pulls it up, carries it along with it. Anchor कहीं रख के जाता है क्या वो? लेके ही जाता है ना. So what about you? Haven't you found your switch yet? So there comes knowledge, there comes wisdom, there comes all these talks that we are talking right now. Because I'm using very simple words so that you actually realize why you are stuck. Making sense? जनेश जी हमेशा यही करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं और दूसरों की भलाई करके चले जाते हैं. So good enough. So I believe, like, if he comes back, he's there anyways, but
I think like his net issues might be there. So when he comes back, we will take him back again. So now Kamlender ji, please unmute. प्रणाम गुरुदेव। Pranam. गुरुदेव, क्वेश्चन तो कोई नहीं है। आज कुछ एक कोइंसिडेंस है और एक एक्सपीरियंस है। Okay. कोइंसिडेंस ये है कि पिछले काफी सारे सेशंस से मैं ये ऑब्जर्व करता आ रहा हूँ कि आप जो फर्स्ट प्रेयर करते हैं ना, वो अपने आप मेरे अंदर से वो निकल के आती है। पहले Good. प्रेयर आपकी बाद में शुरू होती है। मतलब अभी तक के मैं अगर कैसे कुछ उसको परसेंटेज में कैलकुलेट करूं तो करीब करीब 95% केसेस में ऐसा होता है कि वो प्रेयर मेरे अंदर से निकल के आती है, वही प्रेयर आप कर रहे होते हैं। एक बात है कमलेंद्र जी, थोड़ा अपने स्क्रीन पे देखिए कितने लोग हंस रहे हैं। ये वो सारे लोग हैं जिनको वही सेम एक्सपीरियंसेस हुए हैं। देखो वो सब मुंह छिपा के नीचे ऊपर नीचे हो रहे हैं अभी, और वो हंसते जा रहे हैं कि हाउ। अच्छा, नाउ यू नो व्हाट यू आर डूइंग। मैं क्यों कहता हूँ एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। नाउ सम पीपल गेट वैलिडेशन इन दैट। तब तक उनको लगता था कि ये ब्लास्फेमी है और जस्ट इट्स ए थॉट और इट्स ए कोइंसिडेंस, और जैसे आपने कहा कि कोइंसिडेंस है। But now you are not alone in this room. So how can the coincidence happen with so many people? सही बात है। एक के साथ हो सकता है, एक जगह पे हो सकता है, but people are sitting across the globe and you see how many are laughing right now. They say even we know what you are going to speak in your session. So तगड़ा कनेक्शन है नहीं? बिल्कुल। और आज एक सपने में एक्सपीरियंस हुआ है। Okay. आप थे हरि भाई थे साथ में, और एक 7-8 साल की कोई कन्या आई। ये भी किसी को हो चुका है। Okay, please go on. तो बस वो जैसे बच्चे होते हैं अपना पोएम कुछ सुना रहे थे, फिर वो आप जैसे एक निद्रा की पोजीशन में थे, सीधे आपको आई, डिस्टर्ब करा, उठाया, और फिर हम लोगों का फिर वो सेशन एक तरीके से शुरू हो गया। मतलब इतना एक वो रहा। क्योंकि ये भी एक फर्स्ट टाइम इस तरीके का एक्सपीरियंस हुआ कि कोई कन्या इस एज की आई उसमें। अभी मुझे लग रहा है वो बारी बारी करके घर जा रही है। हाँ, ये हो सकता है। She's going by number wise. She's going, I believe. अच्छा, इनका हो गया टिक, उनका हो गया टिक. It's all that is like the kind of experiences that people had during these Navaratras, the kind of जैसे आभा जी last time we share कर रहे थे, like the way she experienced it, and there are many other people in this room those who have experienced in such beautiful ways. And चलो कमलेंद्र जी। तो गुरुदेव, वो जो मैंने आपको एक लिखा था, जो एक्सपीरियंसेस हुए हैं, डिस्टर्बिंग है वो। मतलब I got it. होते वो 9 दिन में ही है, उसके बाद नहीं होते वो कभी। उसका कारण है। So you will come to know because you will experience something beyond that also. That's just a indication of that thing now. Okay. कुछ चीजें आने वाली हैं आपके सामने, so it will take you to another realm altogether. Because मैंने आपको कहा था कि there is a realm where things are not खंड विखंड है वो। Okay. So might be that's a glimpse right now. You are already having it, so it will manifest and you will realize that part. Okay. And the only thing is there will be someone to guide you through, and you will see that, and at the same time you will not be fearful, and because it's already there holding your hand. But you will go through that space because all of you will go through that. उसमें एक्चुअली fearful तो कुछ नहीं होता। होता क्या है कि जब आप कर रहे हैं ना, this is just the trailer that you saw. Okay. There might be. Okay, so but the only thing that I can say is this: they say no, the path to heaven goes through hell. Yeah, no doubt. And if you get stuck in the hell, you are there. But if you pass through, then you reach heaven. Absolutely. इसीलिए कहते हैं ना कि डर के आगे जीते. What is that? डर means what is that? Hell. आगे जीते means what? Heaven. What else can we say? Just like that. So
there is something coming for you, then be ready. Okay. And when you see that, you will absolutely relate to that, because अगर मैंने अभी कह दिया ना, then you will start imagining that. I don't want any imagination process to be done. जी. May that guide, that thing that is guiding you to look at those things in that specific manner. Last time जैसे आपने कहा था कि if somebody has an acid attack, you are ready to help them in certain way. This time you have seen some other things, right? Yes. नहीं, वो तो गुरुदेव उस दिन से ही मैंने 51,000 रुपए उठा के अलग से रख दिए हैं कि जब भी वो सिचुएशन आएगी, आई एम रेडी फॉर दैट. उसने किसी के लिए रखा है. हाँ, बस उतना ही है. Now I'll tell you one beautiful thing, Kamlendra ji, that happened last Saturday. We were traveling and we didn't had any plans to go there. We were traveling to Warangal. We didn't had any plans to go there, and suddenly Lavani ji said, we went to a small little hotel where you have to have the breakfast, and there all the places and how far they are, it was already written. What a beautiful thing it has done. Instead of writing posters and all those things, he has kept all the amazing places all around it and how much far from that place where they are. Then we saw like the temple of Bhadrakali temple. It is just 8.2 kilometers away. And we were about to go to some other place. Then we decided there only, okay, let's go there. Okay. So we went there, and when I went there, many things have happened, but I will just share one thing about that. One specific thing that happened is during Navaratra, I was seeing a particular image coming in the Instagram posts. One particular Devi's picture is coming again and again. I didn't focus on that, but it came 3-4 times, almost daily one time. Then I went into the temple, and the moment I looked at it, I saw it tu hai kya? See. It is the same temple and the same Vigraha which we have been seeing again and again on my screen, and she's there. And then something typical happened. इससे सीखने वाली बात है. We went there, whatever has happened there happened, many things, because the people, those who were there, they will tell you what all. Then we came out and we were standing there taking some photographs. And then suddenly they found a 500 rupee note there. Okay. Then what would you do? The money that you got, they asked me, is yours? Is it yours? Mera nahi hai. Then what to do? I said, distribute. So there were many people begging on the streets out there. So I said, go change leke aao. So Haribhai managed to bring change and we started distributing it. I said, what did you learn from that? Actually, Navneet ji was with me. So I said, what did you learn with that? He said, what was the learning? I said, it is given to them who know how to distribute. उसी को दिया जाता है जो बांट सकता है. And more than that, one more thing that you have to understand. You went and gave it to the people, those who were asking, begging. जो मांग रहे थे उसे आपने दिया. But did you realize that you became a source through which that money was transferred to them? आपके जरिए वो भेजा गया उनके पास. How? Do you know that? You don't even know that. Okay. But from the perspective of the person who got it from you, does he knows from where did you get? जिसको आपने 20, 25, 50 रुपए करके दिया तो खुश हो गएंगे. Oh wow, I got a 50 rupee note. I got a 100 rupee note today from one person. Huh? They're happy. But did they know from where you got it? So can you see, nobody knows anything, but everybody thinks this is mine. सही बात है. Now there is somebody else who must be crying, मेरे 500 रुपए कहाँ गिरे? Yes or no? आपके 500 कहाँ गिरे आपको पता है?
Do you know from where you have your 500 rupees has fallen? You don't even know, but you cry, but you don't know where it was utilized, through whom, to whom. और हम कहते हैं कि मेरा आज 500 रुपए गिर गया, 1000 रुपए का ही खो गए. कहां से लेके आए थे? You don't even know. You say, no, I worked hard for that. अच्छा, work hard तो brick उठाने वाला भी करता है. फिर तुम्हारे पास ही क्यों? Why have you got that? That means if that has been given to you, it will continue to give to you if you know how to distribute that. And then at the same time, realize whenever money is falling into your account, you just wonder from where it came and thank him. कहां से आया पता नहीं, लेकिन दिया है ना. जितना मेरे लिए दिया है उतना मैं अपने लिए रख लूंगा, और उसका छोटा सा भी जो है वो किसी को दे दूंगा. But amazing part, Kamlendra ji, one more beautiful thing that we have to understand. हम लेने के टाइम पे राजा होते हैं, देने के टाइम पे भिखारी. We are king while taking and beggars while giving. Yes or no? Absolutely. Because we think, अरे इसको 50 रुपए दूं क्या? अरे बट अपने लिए तो 500 करोड़ मांग रहे हो. You are thinking to give 50 rupees, but you are talking over 500 crores. Is the matching? Is there a matching between these two mindsets? No. There is no matchup. Then how do you think you will get it? So that is where the magic begins. You should realize first and foremost thing there. She is that. Mhm. And Kamlendra ji, you know the height of the Devi? It's almost 8 feet. Oh. 8 feet की है, और that face itself is so huge and beautiful, absolutely beautiful. And ये फोटो में तो कुछ भी नहीं लग रहा है. The way she was glowing on that day, nothing seems on this photo. Not even a % of that I can say. So what we have to do? If you want to take like a king, you should also give like a king. But there is a story. Shall I tell a joke? It's okay. Yeah. I have already told that. I'm not sure. Did I told you the story of the miser? Last time bola tha? Yes. So that's how. Bada wala mango. When you don't even have it, you are thinking so much. So only one thing. Whenever you feel like giving something, you see, you will have an urge. आपको देने की इच्छा होगी, आपके अंदर एक मनसा जागेगी that I should give something. You don't know that person, that fellow is going on his way. He's not even a beggar. But by looking at you, you feel like, अगर इसने मुझे पूछा तो मैं इसे कुछ दे दूंगा. Has it happened or not? It happens many times. And there have been also situations where people have come and pulled your dress also, and you are not ready to give them a single pie. You don't feel like giving them. You feel irritated in that moment. Yes or no? Yes. You are not the source through which the money will transfer to them. That's it. बस उतना ही. आपके जरिए उस तक कुछ भी नहीं जाना है. उसका काम कितना है? What is the work of that person out there? To irritate you. That's the only experience they are there to give it to you. That's it. No more thing. No more drama. उनका काम ही था आपके अंदर उतने ही. You might have seen, Kamlendra, you are traveling and suddenly somebody stops the vehicle and looks at you with a very angry way. आपने कुछ किया ही नहीं है, लेकिन आपको ऐसे गुस्से में देखता है. आप बोलते भाई क्या हो गया? They have only there to give you that much experience. That's it. But if you start looking at it, okay, everything is just here to give me an experience, but this is just a source through which everything is traveling. So I have become the portal through which the divine is connecting with its creation. Now, how beautiful the portal should be. You don't agree you are divine? Okay, just be the portal.
I will see that even that itself is so amazing. आप कहते हो कि उससे क्या होगा? मैं बोला घर में नल लगे हुए, everybody has a pipe connection, water pipe connection in your houses. What is the importance of that pipe? The importance of the pipe is it is providing you the water that you drink and you are alive. Even that source, even that becoming just that source through which things are traveling. That's why it's, become the hands of God. Just like that. नहीं, वो तो गुरुदेव बहुत ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, मतलब बता नहीं सकते। और अब तो लिटरली ऐसा ही होता है कि ठीक है, अब तेरे को करना है, जो कर रहा है तू सही कर रहा होगा, बस जैसा भी है, अब तेरा है जो है वर्किंग। ऐसा करने के बाद में मतलब मैंने अभी तक कोई ऐसा काम नहीं देखा जो असफल हुआ है। आपको मैं एक छोटा सा इंसिडेंस बताता हूँ। हुआ क्या था, जैसे अभी एक पर्टिकुलर टाइम पे उनका उच्चारण करना था मंत्रों का, तो एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे को जाके और वापस आना था, बट इट कुड हैव टेकन मी नॉर्मल डेज में मेरे को 2 घंटे से कम नहीं लगता, और मेरा वो टाइम निकल जा रहा था। तो मैं तो माता जी को बोला, मैंने कहा आपको देखना है, करवाना आपने है मंत्र मेरे से, मैं तो सिर्फ साधन एक वो हूँ, मीडिया हूँ। और चांस ऐसा पड़ा गुरुदेव कि उस दिन मैं डॉट टाइम पे घर पे पहुंचा और सही समय पे मैंने मंत्रों का उच्चारण किया। That has become like ऐसा करें, we have become miracle prones. पहले हम डिजास्टर प्रोन थे, अब मिराकल प्रोन हो गए। That's it. The transformation from there to here. नहीं तो पहले हर चीज जीवन की खटकती थी। Everything in life was so. नहीं, सही बात है। अगर कोई और समय रहा होता ना, तो इतने डिस्टेंस पे जाके वापस आने के लिए मैं थोड़ा सा अपने आप को भी लगता है कि इतना ट्रैफिक में जाना है, इतना दूर, फिर वापस आना है, बिकॉज इवनिंग आवर्स होते हैं, बहुत ट्रैफिक होता है, तो इरिटेशन होने वाली थी। लेकिन मैं जब निकला तो सिर्फ ये बोल के, माता जी आपको देखना है जो देखना है, मैं टाइम पे पहुंच गया तो उस समय पे माला करूंगा पक्का, वो सब जिम्मेदारी उसकी। और चांस ऐसा था कि हर सिग्नल ग्रीन मिला, कहीं रुका नहीं, और डॉट टाइम पे घर पहुंच गया। So live that. That's why we should be living in that way. उसमें बहुत आसानी है, बल्कि मैं ये देख रहा हूँ जो लाइफ हम पहले जी रहे थे उसमें और इसमें तो बहुत फर्क है। That's what, no, Kamlender ji, if you go by science says that if you have to laugh, you use less muscles of your face, but if you have to grin, you use more muscles. बिल्कुल। And you see more people are grinning rather than laughing. क्योंकि मुश्किल वाला काम पसंद है। कई सारे wrong theories दे दिए गए हैं। Some theories are so wrong out there that they should be revived. कहते खोए बिना कुछ नहीं मिलता, हमें तो बिना कुछ खोए आप मिल गए। सही बात है। और मिला ही। I have not lost anything, but I found you. Where did I lost? So that things, hard work. Yes, do hard work, no problem. But only hard work? अगर गलत जगह पे गड्ढा खोद रहे हो तो क्या होगा? कुछ भी नहीं। And then they say, you have to die to go to heaven. I say, why don't you create one here? हाथ दिया ना, he has given you hands, he has given you mind, he has given you strength, he has given you enough. Why don't you create one here? एक सुंदर कथा याद आ गई, कमलेंद्र जी, I don't know, like today Raj Arora ji shared a beautiful thing in one of his videos. He creates some just small videos nowadays. I says like, why don't you share it? But he said a beautiful thing in that. I don't know how well he understood what he said, but it literally touched me. And I said, this is something that I will be speaking tonight, whether somebody allows me or not. Please. Are you allowing me to do that? How do I care? Anyways, I'm going to say. So he says like, there are people, those who don't have riches, but they are rich at their heart. So he was giving an example of a person who is sweeping the floor. Okay.
So he's a sweeper, झाड़ू लगाने वाला है. So he's sweeping the floor and for long hours he's continuously sweeping it. All others have left. He is going on sweeping that. So झाड़ू लगाते जा रहा है. Then one person who was observing him, he says, तेरे को और कोई काम धंधा नहीं है क्या? You don't have any other work. For hours you have been cleaning it. How long do you want to clean it? He says, this is the way I work. I'm not satisfied until this is done. I just want to give my best. And then that person asks, why do you want to give your best? ये झाड़ू लगाना भी कोई काम है तो दिन भर झाड़ू लगाता जा रहा. He said, I only know one thing. कि मुझे झाड़ू लगाना आता है. I only know how to sweep. But I want to sweep it in such a way. Now listen what he said. I want to sweep it in such a way that if the God has to come onto this earth, he will come here only because I have kept it so clean. बोलो, मैं इस जगह को इतना साफ कर दूंगा कि अगर भगवान भी को आना है ना तो इसको यहीं आना पड़ेगा क्योंकि मैंने इसे इतना साफ किया है. मैं कहता हूं फिर ये क्या है? हाँ, सही बात. जो काम कर रहे हो, अगर प्रार्थना कर रहे हो तो ऐसा होना चाहिए कि अगर भगवान को किसी की प्रार्थना सुननी है तो मेरा ही सुनना, क्योंकि मैं तो अपना प्राण लगा के कर रहा हूं. अगर मैं खाना बनाती हूं, if I'm just cooking the food, I will cook the food every single day in my house in such a beautiful way that I will decide every single day if God has to come and eat, he will only come to my house to eat. Then what? मैं झाड़ू लगाने से भी वैसे ही करूंगा जो, and I will dress myself so well that if God wants to meet someone, should meet me. That's it. मैं जो कुछ करूंगा इतना अच्छे से करूंगा कि अगर उसको किसी से बात करना है तो मेरे से ही बात करा, because I will speak so well. अगर उसको किसी को कुछ बताना है, he will choose me because I hear so well. अगर उसको किसी से मिलना है, मुझसे मिलेगा because I am so good. खाना खाना है तो किसके घर जाएगा? क्या कहते हैं? Did you realize it is such a small story, Alivaji? Such a small thing, but what a great realization. Every single day, whatever I'm doing, like Dhavalji is driving. He says, I am driving so well that if the God has to come, he will come and sit by my side. He will feel safe with me. He's a great driver. Yes or no? क्या कहते हो? जीवन कैसा होना चाहिए? That every acts of mine, everything that I do is such amazing that if the divinity has to come, it will only come here. और मैं वैसा ही कार्य करता हूं. I will do that way. Yes or no? Then tell me anything, can you do anything wrong? Can you do anything sluggish? Can you do anything that is not up to the mark? Can you do a sloppy job? No, you cannot. Why? Because you have devoted every single thing towards the divinity. Just like जैसे सबरी ने किया था, वो रोज सुबह झाड़ू लगाती, रोज सुबह पोछा लगाती. क्यों? मेरे राम आने वाले हैं. आए नहीं आए? आए ना? फिर आपको क्या डाउट है? What doubt are you carrying? And why are you carrying the doubt? जानते हो क्यों? बता दूं? Why you fear that the God will not come? क्योंकि झाड़ू सही नहीं लगाया आपने. You have not cleaned it well. That's why you doubt that whether he will come to this place or not. Because if nobody knows, you know deep down in your heart how clean you are. Absolutely. And the doubt about the divinity is not on the divinity. The doubt is on myself because I know ये place तो अभी तक इतना साफ नहीं हुआ कि वो आए. और अगर साफ हो गया, I will not even think whether he comes or not. I will just keep it clean and it has to come. क्या कहते हो? एक भजन है सर इसी में, हमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान. तो हम कहते हैं कि भगवान आता है क्या? मैंने कहा पहले साफ किया क्या? So it's, again, can you see? It has given you those kind of
ideas, those kind of strength, those kind of things that you can absolutely build it in such a beautiful manner. Just this small little thought, how it just melted your hearts, right? It's like dipped in honey right now. क्यों? आपने बोला इतना आसान है? हाँ रे भाई, इतना आसान है, कोई बेताल बन के लटकना नहीं है आपको। और उसने क्या कहा है? अतिथि देवो भव। अतिथि का मतलब क्या है जानते हो? एक मतलब आप जानते हो, मैं दूसरा मतलब बताना चाहता हूं। यू ओनली नो वन वे, आई विल टेल यू द अदर थिंग। अतिथि देवो भव, और हम कहते हैं देवो अतिथि भव, राइट? अब उसका दोनों का बता देता हूं आपको। अतिथि देवो भव मीन्स जो तिथि, बिना तिथि देखे जो टपक पड़े वो है अतिथि। यही जानते हो ना, आपको यही बताया गया ना। दैट डजंट सीज एनी टाइम, डेट, एनीथिंग, जस्ट कम्स टू योर होम, वो अतिथि है जो तिथि के बिना आ जाए। लेकिन मेरे हिसाब से अतिथि कुछ अलग भी होता है, जो तिथि से परे है। अतिथि जो समय से परे है। कौन है समय से परे? हु इज बियॉन्ड टाइम, हु इज नॉट इन द रेल्म ऑफ तिथि ऑल्सो। हु इज दैट? God. And what did Iman always used to say? Stay God, be God. What does that mean? अतिथि देवो भव। जो आया वो भी भगवान, जो बन के आया वो भी भगवान। किसके घर में? ये भी देव। जो तिथि से परे है वो भी अतिथि होता है, और इसीलिए हम कहते हैं कि देवो अतिथि भव। अगर तू just you want to come like that, also come like God only. You cannot hide, because हमने अपना घर इतना साफ रखा है कि तेरे बिना और कोई आएगा ही नहीं। और कोई डाउट है कि भक्ति मार्ग क्या होता है, ज्ञान मार्ग क्या होता है? No, we have been talking all that only. All that we have been speaking, वही भक्ति मार्ग है, वही ज्ञान मार्ग है। Yes or no? सब एक सुंदर कथा है। अगेन, like I don't know. Any other questions? First of all, Deepika ji raised her hand and she vanished somewhere. Okay. Okay. So Dhaval ji says, shall I go and sit by his side? You drive well first. आएंगे हम आपके पास। वैष्णवों के सबसे, अब देखो ये इट माइट रेज आईब्रोज फॉर पीपल। कई सारे लोगों के आईब्रोज उठ जाएंगे हाँ बोल के, बट यू लिसन व्हाट आई एम गोइंग टू से एंड लिसन इट कंप्लीटली। आधा खिचड़ी खाओगे पेट खराब होगा। वैष्णवों के सर्वश्रेष्ठ देवता कौन? विष्णु। रॉन्ग, शिवा। अच्छा। लेकिन होता यही है, शैव और वैष्णव में बीच में वो जो चलता है। Did you realize that? हम्म। ये किसने डाला? Who brought it into the head? Because people don't know one thing about it. वैष्णवों के सर्वश्रेष्ठ देवता, अगर सही वैष्णव है जिसने सच में पढ़ाई की है, उनका सर्वश्रेष्ठ देव कोई नहीं होता है, महादेव होता है। क्यों महादेव को रखा गया सर्वश्रेष्ठ वहां पे? क्योंकि बिल्कुल उसी तरह जो साइवाइटिस होते हैं उनके सर्वश्रेष्ठ भगवान कौन होगा फिर? उनके विष्णु होंगे। विष्णु है, बट दे विल नेवर रियलाइज दैट एंड दे फाइट ऑन दैट पार्ट। लड़ाई कौन करते जानते हो? जिनको कुछ नहीं पता। The ones, those who don't know, they fight saying that I know. लड़ाई उनके बीच में ही होती है। क्यों कहा जाता है कि शिव को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है वैष्णवों में? खुद विष्णु उनकी पूजा करते हैं। Not only that, अब देखना एक अजीब सा चीज बोलने जा रहा हूं, एंड आई एम सेइंग इट ऑन द recording right now, but listen to it very carefully because many might get lost in that.
So just hold on and listen to it carefully. कृष्ण को आप एक छोटे से बच्चे की तरह देख सकते हो, उनको अपने सखा की तरह देख सकते हो, उनको अपने स्वामी की तरह देख सकते हो, लेकिन उनके साथ दो रिलेशन एक ही बार नहीं रख सकते। बिल्कुल। लेकिन शिव एक ऐसा है जो पांचों के पांचों रस के बारे में बात करता है। वो पांचों के पांच, वो भगवान भी बनता है, वो भक्त भी बनता है, वो दास भी बनता है, वो स्वामी भी बनता है, वो रक्षक भी बनता है, वो भक्षक भी बनता है। अब देखो, बोले ये कैसे? When Shiva is sitting, ये कहा जाता है कि वो जब ध्यान मग्न होते हैं, मतलब when he dives deep into the ध्यान। आप कितना घंटे बैठते हो? तो today I sat 3 hours. I feel like Shiva. आगमस में मेंशन है कि अगर मनुष्यों के समय का कैलकुलेशन किया जाए, Shiva's shortest meditation time is 74,000 years. 74,000 साल का मेडिटेशन उसका छोटा मेडिटेशन होता है। हम कहते हैं 3 घंटा मेडिटेशन किया जाए, आई फील लाइक शिवा, वाओ। तो आप, you must having special blessings on you, you should be happy, right? So when वो लय में जाते हैं ना, ध्यान लय जिसे कहते हो, सो ध्यान लय में गए तो उसके जैसा योगी नहीं। So one way, if you want to go into the path of dhyan, nothing like him. Then when it comes to sevak bhav, the one who can come as a service provider or a helper, क्या बने? हनुमान। अच्छा, हनुमान बनने के बाद एक बहुत सुंदर घटना घटी। You all know हनुमान is the 11th रुद्र अवतार, लेकिन वो बाल ब्रह्मचारी है ना जी। फिर शक्ति कहां गई? वेरी शक्ति? एवर थॉट? क्योंकि आप ही कहते हो कि शक्ति के बिना शिव शव है। फिर हनुमान, फिर शक्ति कहां गई? दिस इज द रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू टॉक नाउ। अरे वाह भाजी, पूंछ बना लिए आप उसे। एग्जैक्टली, क्योंकि जब हनुमान रूपी अवतरण होने वाला था, तब शक्ति ने कहा कि आप तो बाल ब्रह्मचारी बनने वाले हो, सो व्हाट शुड आई डू, व्हाट विल बी माय कंट्रीब्यूशन इन दिस? I am going to be the Rudra avatar, so no contribution needed. But she says, I will not allow you to go anyways, alone. मैं वो काम करूंगी जो आप नहीं कर सकते। What all you cannot do, I will do. अरे तो कैसे? आप बानर बन के जाओ, मैं पूंछ बन के जाती हूँ। You go as Hanuman and I go as your tail. क्योंकि उसके बिना कभी अलग नहीं हो सकते। लेकिन दुखद बात यह है, हमेशा शक्ति ही जलती है। वो चाहे सती थी तब भी जली, सीता थी तब भी जली, या हनुमान की पूंछ में थी तब भी जली, आज भी जल रही है। ये दुखद बात है। That why does a mother has to always suffer? And that too in the hands of her own creation. But I believe when a mother gives a birth to a kid, it goes through intense pain, but she is ready to take that pain because she wants to create something beautiful out there. बिल्कुल उसी तरीके से जब कोई आग में झुलसता है, वो चाहे सीता हो, सती हो, या हनुमान का पूछ, they did it
because they knew something greater has to come out of it. लेकिन अक्सर कमलेंद्र जी दो तरीके की चीजें जलाई जा सकती है। एक वो जैसे जली एज ए देवी, दूसरा लकड़ी, और हम लकड़ी की तरह जल जाते हैं, राख बच जाता है। वो जलते हैं तो कुछ नया अद्भुत बन जाता है, ये डिफरेंस है। एंड हरिभाई समथिंग somebody wrote so beautiful, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या खाते हो, इससे फर्क जरूर पड़ता है कि आपको अंदर ही अंदर क्या खा जा रहा है। You get that? It doesn't matter what you eat, all that matters is what is eating you up within. हमें इसीलिए कबीर जी का दोहा याद आ जाता है कमलेंद्र जी, चिंता ऐसी डाकिनी काट कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे कब तक दवा खिलाए। So here again Shiva's other ways are so beautiful. तो जब भक्ति भाव में उतरते हैं तो उसके जैसा भक्त नहीं, और जब शक्ति भाव में उतरते तो उसके सिवा बलशाली भी कोई नहीं। मित्र बनता है तो उसके जैसा मित्र नहीं, गुरु बनता है तो उसके जैसा गुरु नहीं, पिता बनता है तो उसके जैसा पिता नहीं। ऐसा कोई भी रोल नहीं है जिसे उसने ना निभाया और इस तरीके से निभाया और ऐसा सिखा दिया है सबको that you cannot even touch him in that space. किसी दिन मैं उसकी पूरा का संपूर्ण व्याख्या करूंगा। Who taught? हम सब जानते हैं ना, कृष्ण गए और चाणूर और इसको मारे, उसका वध किए थे ना, कैसे? By fighting with them ना, मल्ल युद्ध। तो ये मल्ल युद्ध सिखाया किसने था कृष्ण को? Who taught him that? शिव ही भी सिखाए थे। शिव ही जब कृष्ण और बलराम गाय चराने जाते, he took another रूप and appeared there and taught them how to do the युद्ध। वो मल्ल युद्ध कैसे किया जाता है उनको सिखाने वाले गुरु भी वही हैं। And he has already always been along with it. जहां जहां कृष्ण गए, जहां जहां राम गए, वो हमेशा ही साथ थे। सो इसीलिए वो ऐसा है जिसको आप कभी कोई भी रिलेशन में बांध नहीं सकते, लेकिन वो हर रिलेशन में बन जाएगा। You see him as your child, he will become a child. बने नहीं बने। And you look at him as your guru, he becomes your guru. And he can be your guru and your friend at the same time. He can be your guru as well as your childhood friend at the same time. He can be your brother and your teacher at the same time. Yes or no? Any relationship, he will still be available at that space. लेकिन उसे देख के कोई रिलेशन बनाना है क्या? Nobody can build that relationship because they are fearful of it. But now, did you realize why all you people, those who were, you were asking that question, I don't remember how this transformation happened from Narayana towards Shiva. This is how. कि अगर आप सच में नारायण भक्त हो ना, आप शिव की तरफ मुड़ोगे ही मुड़ोगे, और अगर आप सच में शिव भक्त हो ना, आप नारायण की तरफ मुड़ोगे ही मुड़ोगे. You will turn toward it anyhow. अलीबा जी देखो, हम बात करते हैं शिव की, लेकिन तिलक हमेशा विष्णु की लगा रखते हैं. That's how it is. That's the beauty of them. चलो कमलेंद्र जी, थैंक यू. धन्यवाद. आपके सवाल नहीं पूछा, लेकिन हम उत्तर बहुत कुछ दे दिए शायद बहुत सारे लोगों को. बहुत
The only thing that you have to remember is that person who was sweeping the floor, right? बिल्कुल झाड़ू मारने वाला. तो आज के बाद जब आप पानी भी भरोगे तो कैसे भरोगे, आप खाना भी बनाओगे तो कैसे बनाओगे, you know it, so go and do it. एक झाड़ूदार से भी कितना कुछ सीखा जा सकता है, हमसे तो कुछ सीख ही लो फिर. चलो धन्यवाद धन्यवाद कमलेंद्र जी. Thank you, Commander ji. Dhaval ji, please unmute. Dhaval ji, you are driving, but be careful with that, huh? Or you have Bluetooth? Pranam, Prabhuji. Pranam. I'm about to reach in a minute, so that's fine. Oh, So I shall just want to continue ask more one. minute? I was reading one book last month, and in which I forgot to remember, but some words were the maximum evolution or ascent you can do being into the human birth. So I just want to know that as a human, what is the maximum we can optimize this birth? Being a god, of course, and salvation, but can you just elaborate a little bit further as well today? Okay, Dhaval ji. You know what about humans? There is a saying that a tree grows as much as a tree can grow. A dog grows as much as it can grow, but a human never grows to its fullest potential. वो जो सर्वश्रेष्ठ कर सकता था वो नहीं कर पाता. Why? Because उसका सर्वश्रेष्ठ है जो स्वयं रचयिता है, the one who has created it itself. So becoming the absolute Brahman, when you become that, then again your creativity becomes unlimited. Did you see one thing? As a potential, as a human, what all you can become is unlimited. And then finally you say, if I become the divine, then also your doing becomes unlimited. All that you are is unlimited, and I cannot put a full stop to that what you can be. And that is why all that we do will always stand short in front of who I am. मेरे सामने वो हमेशा छोटा ही रह जाएगा. लेकिन क्या करना है? As per the power, knowledge, wisdom, and all that has been bestowed upon me, I will give it my best to the ultimate. जितना दिया जा सकता है मैं वो दूंगा. Then what will happen? I am not sorrowful that I have not given it the best. So what all you can do? You can do anything. But the thing is, whatever you are doing, how are you doing it? There is a saying again, you are not intended to do great things, but you are intended to do little things also, but with great care. आप जो कुछ भी करो, ज्यादा करो ना करो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा. जो भी करो सर्वश्रेष्ठ करो. Whatever you do, do and make it your best. Because you have been created in the framework of the divine itself. Then, what is my potential? What should I do? Unlimited. How can I define it? Because it's the same person who becomes like a demon, and it is the same who becomes like the divine. So become whatever you want to become. It's your choice. And you can see how beautiful it is. It has also given the choice whether you want to play this role or that role. He's not even kept that script with him. Because it's all you. So how far will you go? How long will you run? It doesn't matter how far I go, how long I run. But wherever I go, I will leave my presence. And whoever comes to that space, they will realize
that this person has arrived. समझ में आ रहा है? It's just like a gardener. Wherever he goes, he will make sure the garden becomes the best. What about us? Wherever you go, create that space so beautiful that people will know. और अक्सर धवल जी ये होता है कि एक छोटी सी कहानी फिर याद आ गई, that there was a colony of people, a small little village, a colony of people, those who stayed there together. Nobody bothered about their front row of houses. घर के सामने जो खाली जगह था, the patch of land, they never bothered. So all that were there were weeds and grasses in front of everybody's house. It looked messy, but because everybody's house was messy, nobody complained. And then one fine day, it is said, one gardener came into that village. And what did he do? In his patch of land, he created a beautiful garden. उसके घर के सामने जो जगह था, उसने उसमें एक garden बना दिया. Now, what do you think? What will happen to other people? What will happen? You keep the things messy because you have not seen anything beautiful. And the day you see that beauty, you will clean up your mess on your own. किसी को बुला के दिखाने की जरूरत नहीं है. मैं यही कहता हूं, अपने आप जो कार्य करते हो इतना सुंदर कर दो कि जो आपके सामने है ना, वो देख के खुद बदल जाए. They start, then what happened? Everybody, by seeing that one person, they started planting good plants in front of their house, and within no time the entire village looked like a garden. How about us? हम क्या करते हैं? हमारे लेके जाते हैं, हमारे यहाँ पे 2 फूल लगा देते, दूसरों के घर में कांटे फेंकते हैं. No, not like that. Wherever you go, your presence should be felt. That's what there is a saying, no? Leave your spark wherever you go. Leave a little glitter wherever you go. So I say, why don't you leave a little divinity wherever you go? You will give what you have. If you give glitter, you have glitter. If you give chocolates, you have chocolates. If you give divinity, go share, live, enjoy. और गार्डन बनाऊंगा तो ऐसे बनाऊंगा जहां पे कृष्ण को आके नाचना ही पड़े. ऐसा बनाऊंगा कि वृंदावन से भी कंपेयर करने लगे, अरे वो है जो वहां जाऊं कि यहां आऊं. और अक्सर वो यहां आ जाता है. नहीं सुधा जी, आजकल उधर दिखे ना दिखे, हमारे घर में तो आजकल बहुत बार दिखते हैं. तो पक्का है, लाइक वी हैव क्रिएटेड ए मच बेटर प्लेस. आभाजी हंस रहे, बोले बिल्कुल सही बात है. आजकल उधर गए तो दिखे, नहीं दिखे, यहां तो घर में घूमते हुए दिख रहे हैं आजकल. गुड इनफ. See, you all these days only ghosts were roaming in your house. You are terrified about the darkness and all this. Now divinity is roaming in your house. You'd be happy. खुश रहो भाई. Yeah, Dhaval ji? Any questions? It was quite detailed one. Second, अभी garden और कृष्ण की बात आई तो एक चीज वो भी कई टाइम से घूम रही है दिमाग में कि I was watching that Nidhivan's videos, which is many a times told that nobody can go there at night, but I was going through some of the videos, few intruders went in and tried to shoot it. So sometimes it's surprised that why it is just a manipulated one or real, that nobody can go and experience that. Okay, so you are talking about Nidhivan. I will talk about another place. Okay, I have another one, but after this, after this we'll take it up, so don't worry. I'll take you a beautiful thing that happened.
near my, you remember I used to go into in my childhood, I used to go to the smashan and do the puja, right? And nowadays when I go there, on that they have made it plain, made a garden and swings and all that things, facilities have been built on that. Swings, oh my god. झूला लगा हुआ है वहां पे, मतलब खेलने के लिए पूरा गार्डन बना के रखे हैं उसको. So they expect kids to come. So it has been filled up and nobody knows that what it is inside that. And then some people complain in the night, वो झूला अपने आप झूलने लगता है. ऐसे तेरे को कौन बोला रात में जाने के लिए वहां? And literally, what should I tell about others? My own brother has made a short video of that and sent it to me. भाई देख रात में कैसे झूला झूल रहा है. मैं बोला जगह किसका है? तो झूलेगा ना. And then you are talking about the Nidhi one. अरे भाई जगह किसका है? तो नाचेगा ना. Why do you always want to go and poke something inside that to see what is happening? Oh, you are too curious. मैं कहता हूं कोई निधि बन जाओ ना जाओ, अपने अंदर वो बना लो, कृष्ण नाचेगा जरूर, वहीं देख लो. And you might have seen all the trees are bending to one side, right? Yes. वो सारे वृक्ष की तरफ झुके हुए, क्यों? No, you want to know everything. ठीक है, अपने आप को भी उसी तरीके से तैयार करो, जाओ, वो आपको खाली दिखेगा नहीं, आपके साथ नाचेगा. But we know intruders, and then they take a photo and make it something else in graphics and show it something else. और यही चल रहा है. धवल जी, अपने आप को वैसा बना लो, वो स्वयं आपके सामने प्रकट हो जाएगा, कैमरा लेके जाने की जरूरत नहीं है. And all those people, you should question one thing. If you really wanted to experience something, you should have gone on your own. Why did you carry that camera along with you? That means you have not gone there to experience, but you have gone there trying to expose something. And then throughout the night you sat there and you could not capture anything. Then when you come out, your friends will say you are a fool. So better, rather than looking fool, I will do a graphics on that. Because in order to see that, you should have that kind of eyes. And courage too, because there are few samadhis inside. I don't bother about that samadhi and courage की क्या बात है? अगर कृष्ण से मिलने जा रहे और डर भी है तो ध्रुव का बात भूल गए हम लोग. ध्रुव जब बैठा था जंगल में जाके, he went into the jungle and then Narad came and he said, you are going, you're a small little boy, you are going into the jungle and there are tigers, lions, they will eat you up and don't you feel fear? He said, when I'm going to meet the ultimate, what fear? और अगर मुझे यही डर लग गया तो मैं उससे कैसे मिलूंगा? How can I even meet the ultimate? तो किस बात का डर? और जो डर डर के जाएगा उसको कुछ भी नहीं दिखेगा, उसको भूत ही दिखेंगे. क्योंकि आंखें तो यशोदा जैसी होनी चाहिए फिर कृष्ण को देखने के लिए, या तो होनी चाहिए राधा जैसी, या तो होनी चाहिए गोपियों जैसी, या तो होनी चाहिए अर्जुन जैसा. आपकी आंखें कैसी है? The way you look. If you are not even vibrating at that level, how can you even imagine to see that? And यहाँ क्या है कि लोग घर में बैठ के भी experience कर लेते हैं. They are sitting at their home and still experiencing the same thing. How? It's all about what you have created. Right? So Dhavalji, next. Next, just a small one. The puja which we have done during Navratri and the coins which has been collected, all this. So, as you said that either you water, like
put it in the water body or give it to somebody who is in need. So I kept it in the car just to give it to beggars. So just now, while coming now, before like 15 minutes back, the one little girl came and I gave one coin to her and said that if possible, don't spend it, just keep it in your wherever the place you want to keep. And she was a bit scared that then she said, no, I don't want it. Then I explained a bit and then she took it. So is it okay just to give it or to explain? Or If I was you, I would have given all the money in the same hands. Do you remember what I said? Was it her skepticism to take, or was it she was checking? And especially I said, like, if these kind of people appear in front of you, अगली बार दिखे तो पूरा दे दो. जिसके नाम पे रखे वो ही आए लेने के लिए, तो फिर आप उसको बोलते इसको संभाल के रखना, खर्चा नहीं करना कैसे? उसको बोलना जी भर के खर्चा कर, और चाहिए तो और देता हूं. चलो, नो प्रॉब्लम, एटलीस्ट एक तो लेके गई ना. चलो कोई नहीं, good enough. But there is no need to tell that don't spend it or something. Okay, so दे दो बस. And don't even feel anything within you now. जो हो गया, that's what has gone, that's it. आपने you mentioned about Dhruv. So same way during this Sharad Purnima, I went to my 5th floor terrace. Generally, it remained closed all the time. Nobody goes there. But this was the first time in like 12 to 15 years I've been there whole night up to 4:30 a.m. So I was meditating. Sometimes I was like keeping eyes open. But the same way, sometimes I remembered Dhruv or Nachiketa, that if he can able to roam across the world, then this is my home. So sometimes some noise comes, so I immediately open my eyes and see here and there what was this noise all about. No, why were you looking at? Were you searching for God or of ghosts? Not ghost, of course, but that's the magic, no, of our mind. It creates ghost faster than God. But it was if amazing. I was you, if there is a noise, I will say, kahan gayi tu? That's how you should, right? See, what is the fear? उषा जी को मेरा डायलॉग बहुत अच्छे से याद है. साड़ी नहीं छोड़ पा रहे हो और संसार क्या छोड़ोगे? So that's how. If you still have the fear of this, that means you have not known who you are. अभी शर्ट पहन के आए ना बाहर से, you came out from outside, now you will just remove it. Will you be thinking? No, then what is the fear of this body? डर उसे लगता है जिसके पास दूसरा नहीं होता. डर उसे लगता है जिसको और एक चाहिए. डर उसे लगता है जिसको कहीं जाना है. हमें ना कहीं जाना है ना दूसरा कुछ चाहिए. If a ghost comes and becomes my one who gives me liberation, what best could it be? The Holy Spirit. Ultimately मुक्ति है ना? Yes. मैं अगर डर के मरा, लेकिन अगर मैं मुक्त होके मरा,
सबसे आंख बंद करके बैठो, आराम से बैठो, उनको बोलना भाई अच्छा करा तू आया, सो सिट अराउंड विथ मी, तेरा भी लिबरेशन करा ही देता हूँ, मेरा टिकट लगा हुआ है, यू ऑल्सो चलो मेरे साथ चलो, कम अलोंग विथ मी. The ghost should not drag you into their place. You should drag them to your space. Right? Your vibrations would be so intense that even such things come into your space. They will also find that, wow, I should go along with him. उसकी भी मुक्ति. ओके, चलो धवल जी, थैंक यू सो मच. थैंक एंड वी विल नाउ मूव ऑन टू सुधा जी. प्रणाम. थैंक यू हरि जी. Thank you, Sudhaji, please unmute yourself. प्रणाम गुरुदेव. प्रणाम. अभी आपने जैसे ये कहा, जो शिव की पूजा करते हैं वो ऑटोमेटिकली विष्णु की तरफ कन्वर्ट हो जाते हैं, जो विष्णु करते हैं वो शिव की तरफ कन्वर्ट हो जाते हैं, डाइवर्ट होने लगते हैं. तो इसका मतलब क्या हमारे इष्ट चेंज हो जाते हैं? वो इष्ट आपको ये बताते हैं कि दोनों में ही हूँ. नहीं, वाकई ऐसे ही होता है, लेकिन ऐसा क्यों होता है? कहते हैं कि देखो भाई, बहुत दिन मेरी एक लीला देख ली, अब दूसरी लीला भी चख लो, क्योंकि वो आना तो नहीं है ना, आप मना कर रहे हो ना, आना नहीं है आपको, तो बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स देख लो, एंजॉय दैट एंड चलो आ जाओ वापस. फिर देखना तुम भी मैं ही बन जाऊंगा. और गुरुदेव कभी कभी ये भी होता है, नहीं कभी कभी ये भी होता है, आप शिव की आराधना कर रहे हैं और उसी में आपको कृष्ण दिखने लगते हैं, या कृष्ण की आराधना कर रहे हैं उसमें शिव दिखने लगते हैं, तो वो ये गड़बड़ चीजें क्यों होने लगती हैं? ये गड़बड़ की चीजें नहीं है, ये सही चीज है. अभी बताता हूं क्यों. चले ये डायलेमा क्लियर कर दो. ओके. मैं जिसके बारे में सोच रहा हूं, अगर मुझे वही दिखाई दे तो ये मेरा इमेजिनेशन भी हो सकता है. If I'm just thinking about something and that is appearing in front of me, it might be my imagination. लेकिन मैं तो पूजा किसी और की कर रहा हूं, लेकिन दिख भी और कोई रहा है. Then what? That means it cannot be my creation of my mind. It's not an imagination of my mind. It is what I'm seeing there. वो reality हो सकता है. And what are they saying? अब तो जान लो, इतना कर लिए, यहां तक पहुंच लिए, मुझे देख लिए, अब जान लो ये दोनों में कोई फर्क नहीं है. उसका नाम ले रहे हो, मैं आ रहा हूं, मेरा नाम लो, वो आएगा, दोनों हैं एक ही. अब तो समझ जाओ. समझाने के लिए कह रहे थे. जैसे कभी कभी आप शिव की मूर्ति के सामने खड़े हो, आप आंखें बंद करते हो तो आपको कृष्ण दिखने लगते हैं. ये थोड़ा फिर लगता है कि क्या हो रहा है. ये भी सुन के कुछ लोग हंस रहे हैं. मतलब ये समझ के परे की चीज. हाँ, समझ के परे की चीज होती है ये. वही तो होना चाहिए, जो समझ के है. परे की चीज है वही भगवान होना चाहिए. जिसको समझ गए वो तो इंसान भी नहीं होता. अच्छी बात है. और वैसे भी दिखे कोई भी, दोनों भगवान ही है हमारे लिए. और वैसे भी दिखे कोई भी, दोनों भगवान ही है हमारे लिए. देखिए 2-2 बार बोल भी रहे हैं. ओके, उतना ही सुधा जी. बस ओके. Thank you, Sudhaji. ओह सॉरी. ओके. एक छोटा सा क्वेश्चन है. उसके बाद ये डिसाइड कैसे करें कि हमारा ये इष्ट कौन है,
हमें वो भी दिख रहे हैं, वो भी दिख रहे हैं। ओके, आपके इष्ट कौन है? हमारा इष्ट तो वही है जो हमें दिखता है, और जो नहीं दिखता वो सर्वश्रेष्ठ इष्ट है। क्योंकि आप जिसे इष्ट मानते हो, इष्ट का मतलब क्या है? देयर इज ए तेलुगु वर्ड इष्टम। इष्टम का मतलब क्या है तेलुगु में? व्हाट यू लाइक, जो आप चाहते हो, द वन हु इज वेरी क्लोजेस्ट टू यू, राइट? यही है ना? ऑल दी पीपल फ्रॉम आंध्रा एंड ऑल थिंग्स, एम आई सेइंग राइट? इष्टम का मतलब वही होता है ना? सो यहाँ पे इष्ट को भी वही है कि जिसको आप दिलो जहां से चाहते हो वही आपका इष्ट होना चाहिए। जिसको आप चाहते हो, और वो चाहत आती कैसे है? वो आपके हाथ में नहीं है, इट्स नॉट इन योर हैंड्स। वो अपने आप होने लगता है, अपने आप बदलने लगता है। फिर आपकी चाहत कब इधर से उधर चली गई आपको पता भी नहीं चलता। तो यहाँ क्या हो गया? इष्ट नहीं, इष्टम भी बदल गया, और पूरा सिस्टम ही बदल गया, कहते हैं जैसे। एंड दैट्स हाउ यू मूव। लव इज ब्लाइंड, वो इंसानों वाला है। यहां तो आंखें होते हुए भी जो दिखाई नहीं देता उससे प्रेम कर बैठते हैं, तो ब्लाइंड कैसे हुआ? ब्लाइंड भी नहीं है। वो इंसानों के लिए लागू हो सकता है, वो भी कुछ हद तक। ओके, तो सुधा जी, एनीथिंग एल्स? ओके, प्लीज अनम्यूट। महादेव। ओके, सुधा जी या दीपिका जी? साउंड इज ऑफ दीपिका जी। दीपिका महादेव। ओके, सो दीपिका जी आप बोल दीजिए फिर। सुधा जी मैं फिर वापस आ रहा हूँ। ओके, Okay, I thought you asked me to unmute. I'm नो sorry. प्रॉब्लम, if whatever it is, please ask. Okay. Actually, the question is, I read a quote like when a person responds to the joy and sorrows of others as if they were his own, he has attained the highest state of spiritual union. So, to what extent is this true? I just wanted to know that. And also, like, whatever may be the case, even if that is true or not, Okay. how do we actually know that we are spiritually progressing? So चलो प्रोग्रेस कार्ड निकालते हैं, and let us bring the progress card out. ओके, हम है ना टेस्ट लेते हैं फिर प्रोग्रेस कार्ड देते हैं, आप पास हुए नहीं हुए, आगे बढ़े नहीं बढ़े। ओके, चलो सरलता से समझा देते हैं। विल गो विथ इजी मेथड। First and foremost thing, how true is that statement that when you feel the sorrows and happiness of others, you have reached the greatest space of divine communion or union. यही है ना? I say that is not the highest, because the highest is there is no others. Okay. Till they say there are two, there is duality. Then how can it be the ultimate? Union means when you are tied together at one space and there is no other left than you. आपके सिवा कोई है ही नहीं. That could be the highest of it. And even in that space, when you said like when you feel like sorrowful about others or not, these are good indications that you are moving to that space, because now you are not only thinking about you, you are also feeling the pain of the other person. Means you have
somehow expanded your space from limitation of this body to beyond this body, because you are able to feel them also, right? Yes. So what does that mean? That means that itself is the indication that the evolution is going on. Means I was only limited to this, I was feeling this. Now I'm also able to feel what the other person is feeling right now in front of me. That means I have expanded my space a little bit more. Yes. Then if I experience the pain and pleasure or happiness of all the people surrounding me, then it's a little bit bigger thing. Right? Just like this, you are walking on the street, and whenever a car comes, you take a little bit side of it, right? Yes. Yes. If you are driving a vehicle, you need a more space. If you're driving a bus, you need further more space. Means how? Just like that, you are expanding your consciousness to the level of the outer border of the things that you are driving. Right? So similarly, that itself shows your consciousness is expanding. So now when you are able to feel the pain and other things that the other person is going on, does it not indicate that your consciousness is also expanding further? Yes. Now, ultimately, what will happen? Everything encompasses within you. When everything encompasses within you, can there be two? Agar sab kuch aap hi ho. Example, our classical example that I always keep on giving. Bottle, water, me. I will never be the bottle, but I can become the water. And the water can become me. How? See the magic. What happened to the water? It became you. Just like that. Anything that, can I separate that water from me now? No. No, right? Because it has already become me. Can I say this part of the water is from that bottle? Can I? No. No. That means this is union. This is the highest level of union when there are no two things left. It's all one now. Yeah. Just like the water became me within a fraction of a second. The moment you become one with it, you don't exist. The divine doesn't exist. All that exists is one, and that one is even not worried, bothered about anything. Because everything it's he or she, whatever name you call it. तो इसलिए जब तक द्वैत है, जब तक duality है, you have not touched upon that true reality. Because in the presence of that singularity, there is no duality. The word singularity also disappears because there is nothing to be compared with, to say that I am alone, because there is no one. All is you. So what is the highest form? When nothing left. When there is absolutely nothing left out. Till then, you can become someone who helps others, who feels their pain. Absolutely good thing. You help them. That becomes a way of your own evolution. What will you realize later? What did Raman Maharshi said? One person asked, how can I help others? What did he say? There are no others. Right? कोई दूसरा है ही नहीं. जिसकी भी मदद करोगे, अपनी ही मदद करोगे. दूसरा कोई है ही नहीं. So that kind of realization might be. That could be the ultimate one. Right? Okay, so Deepika ji, the second question is more crucial, I believe, for every one of us. How do I know if I'm evolutionizing in spirituality or not? मैं spirituality में आगे बढ़ रही हूँ या नहीं बढ़ रही हूँ? यही सवाल है ना, कितने लोगों को है? Please type yes. Only my question, maybe, Mahadev. No. It cannot be your question. सबने अपना अपना लंगर डाल रखा है.
हाँ, यू रिमेम्बर लाइक द एंकर, हाँ, एवरीवन, सबके एंकर पड़े हुए हैं और सब कहीं ना कहीं लटके हुए। सब बोलते मैं ब्राह्मण हूँ, लेकिन डर डर के बोलते हो। इसी से पता चल जाता है कि लंगर कहीं पड़ा हुआ है। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, लेकिन दूध वाला नहीं आया, लंगर कहीं और पड़ा है। समझ रहे हो? But I still am happy. At least you are trying to say that. At least by searching, saying that someday you will press that button and the langar उठ जाएगा. The anchor will be going up. Then you carry on. Okay. So how do we know? अच्छा, सरलता से बता देता हूँ, so that you can teach to your kids. How do you know whether you are spiritually improving or not? First and foremost thing, how do you know that your belly is full? आप खाना खाते हो, आपको कैसे पता चलता है कि मेरा हो गया और नहीं खा सकता या और नहीं खा सकती? How do you know? You don't feel like eating, right? Anything that nobody understands in this room. मैंने जो अभी कहा, एक बच्चा भी समझता है इसी बात को, कि उसको पूछना है कि तुम्हें कैसे पता चलता है कि तुम्हारी भूख मिट गई है? बोलेंगे और खा नहीं सकता मैं। नहीं, तुम्हारा सबसे प्यारा चीज लाके दूं, खा लोगे? योर थिंग दैट यू डाई फॉर, मतलब मुझे वो चाहिए ही चाहिए। अगर वो लाके खिलाओ रेवती जी, खा लोगे? पेट भरा हुआ है, नहीं खा सकते। So there is a space where you know once it is filled, after that you cannot even sip a drop of water. हुआ है किसी के साथ? मेरे साथ बहुत बार होता है जब आपके घरों में जाता हूं। तो मैं किसी और का नहीं, अपना खुद का बता रहा हूं। जब आपके घरों में जाता हूं, मेरा हाल वही कर देते हो। तो एक मतलब पानी का सिप लेने के लिए जगह नहीं है उतना। So how do you feel in that space? Anything in this world, वो बोलेंगे ना ये दुनिया का सबसे बेहतरीन मिठाई है, खा लोगे? You won't, right? उसी तरीके से, that is the place where you realize how, whether you are traveling in the path of spirituality, whether you are improving in the path of spirituality or not. Just by the single act of eating the food. When I am hungry, what does that indicate? I am searching. What am I searching? That can satiate my hunger. जो मेरी भूख मिटा सके, उसको मैं ढूंढ रहा हूँ. What happens? Then I start searching about God, myself, all that. पूजा पाठ सब करते हो नहीं करते? That is first step of you moving into the realm of spirituality. क्योंकि आपका मन उसे ढूंढने लगा है. ये पहला स्टेप है, नहीं है? Anybody can deny that? मुझे भूख लग रही है, इसका मतलब मुझे खाना चाहिए किसी भी तरीके से। या तो ऑर्डर करूंगा, मंगाऊंगा, या खुद बनाऊंगा। Yes or no? But I will eat because the hunger is that much. उतनी भूख लगी है। So when you start having that kind of hunger towards the divinity, that means your spirituality journey has already begun. Agreed? First step. Let's move next. Then the food is ready and you are able to see that the food is being cooked. What does that indicate? That means within some time the food will be on my plate. खाना बन रहा है, मैं देख रहा हूं. Then what happens? You travel to places where you start seeing certain things. जहां आपको कुछ दिखाई देने लगता है. You see, oh, I saw something happened there, but I think. जब आप देखो, जब आप बिगिन करे थे, आपने बहुत बार सोचा होगा कि अरे ये मेरा इमेजिनेशन था क्या? Yes. Right? So what happens? It comes in the form of a visual. Then what? Smell also comes. Means you start experiencing divinity through the five senses. जो आपके इंद्रियज हैं, उसके जरिए उनको एहसास करना. That's what we talked about during Dashara. What is the next step? Now I am able to at least feel them in some or other way. हो गया?
Next step, the food is ready on my plate. Experiences और ज्यादा होने लगे. I can feel the God if I raise my hand. ये भी हुआ है किसी के साथ? Next, now I eat the food. What does that mean? Two things are happening at the same time. One, my hunger is slowly getting satiated, and at the same time, the food is also becoming me. है कि नहीं? इसका मतलब मैं जो ढूंढ रहा था उसकी शांति मुझे मिलने लगी है, उसका आनंद मुझे आभास होने लगा है. And at the same time, I am becoming like that. उसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए. Yes or no? So what is that step? Now I've started eating that food. Then at the same time, we need some other tastes also. कुछ अलग भी चखने को मिल जाता है, कुछ अलग भी experiences को मिल जाता है. That's where what happens is when we are in this world, we are also experiencing divinity and the world at the same time. Yes or no? मैं दिव्यता की तरफ भाग रहा हूं. I'm running towards divinity, but at the same time there are responsibilities of my world. Yes. There are desires of my world. Yes. So ये चलता रहता है. These are going simultaneously, one by one, right? So what happens next? There will be a space where you have eaten completely. पेट भर गया. किससे? खाने से. अब संसार का कोई दूसरा खाना लाके आपके सामने रखे तो खाओगे? If I bring anything better than that also, will you? No, you are full. So what do? That very moment you say हो गया. आपको छोड़ना पड़ता है या छूट जाता है? छूट जाता है. उसे क्या कहते हो? वैराग्य. So when you come to that space of spirituality, when you say I am absolutely done with all these things, पूर्ण हो गया हूं, अब और कुछ नहीं चाहिए. ये नहीं कि इच्छा है और छोड़ रहा हूं ना, वो तो बाध्यता हो गई. It is not out of force, but I don't need it anymore. वो क्या हो गया? वैराग्य हो गया. So what is that space now? Now nothing is able to bind me, neither I am interested in binding anything. मैं उनसे मुक्त, वो मुझसे मुक्त. उसे क्या कहते हो शब्द में? मुक्ति. कि ना मैं किसी से बंधा हूं ना कोई मेरे से. क्या हो गया वो? मुक्ति. Mahadev, is Yes. it about the physical realm that you're saying, or even with the God? No, first of all, you have Even to with understand Guru. at the physical realm ना. Physical realm को समझना पड़ेगा, because we are too much tied to this body. And that also reflects simultaneously in your spiritual realm also. Now, how many of you are there in this room right now? The same thing that used to like pull you out, कि यही चाहिए. अब देख के भी कोई फर्क नहीं पड़ता. What is that? What's that? है तो है, नहीं है तो नहीं है. कोई फर्क नहीं है. Even if it is there or not, it doesn't matter anymore. What happened there? Have you closed your eyes towards the world? No. But the world is no more pulling you. Neither you are pulled towards it anymore. हो रहा है? So that is another realm of spirituality. Then what happens? Then there is a space. I just either want to do all the good things for others. मुझे सबके लिए भला ही करना है. You just do what? You just sit there, meditate, or whatever you are doing, you just want to bless everything in this creation. Right? Why do you want to bless everything in this creation? Because now you are so satiated, so filled up. हमारे घर में जब ज्यादा मिठाइयां आते हैं क्या करते हो? बांटते हैं. हाँ? आप कहोगे फ्रिज में रखते हो. अच्छा, उससे भी ज्यादा मिठाई आए क्या करते हो? Distribute. जब आपके अंदर भर जाएगा ना उसका प्रेम, तब क्या करोगे? डिस्ट्रीब्यूट.
What is that space of spirituality then? कि मैं उससे इतना भर गया हूं कि अब रखे नहीं रखा जाता, अब तो बांटना ही है. I have to spread it anyways. और वो छलक जाएगा, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, वो छलक ही जाएगा. It will bounce on its own. Overflow. What is that space of spirituality then? Have you evolved? Yes, you have evolved. Then you merge absolutely into it for once, never to return back. Wow. That's called as yoga. The moving from bhoga to yoga. Bhoga of this world, slowly moving towards that space. वही था ना, खाने का जब बैठते हो उसको भी क्या कहते हो? भोगी कहते हो ना. देन जब कंप्लीट मिट जाता है, तृष्णा मिट जाती है, तब क्या होता है? तो भाई बस से हाथ जोड़ लेते हो, भाई और मत खिलाओ. Spirituality is just like that. समझ में आ रहा है? So मैं तो खाली इंतजार कर रहा हूं कि आपकी गागर कब भरे, तब छलक जाएगा. और उसके बाद कहूंगा ये गागर कब फूटे, तो फिर मिल जाएगा. क्योंकि मटके में जब 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 आपने देखा होगा, बचपन में मैं नदी में जाता था तो वो मिट्टी के मटके लेके जाता था. So I keep it inside the water to see what is happening to that water. See, that pot is inside the water now, yet because of its outline it is separating that water and the water inside it. उसको फिर भी एक छोटा सा विभक्त करके रखता है. कब तक? जब तक वो टूट ना जाए. So that means there will be a space where you are completely filled with divinity. You are feeling the experience of pain and pleasure of other people also. But in that time, there is still that small little pot remaining. वो तोड़ना है और वो टूटेगा. And when that breaks, is there any differentiation between those water anymore? No. Then when you submerge completely, then you break yourself to become it, not to separate yourself anytime again. These are the steps of spirituality, as simply as I can say. खाने के जरिए समझा दिया, अगर समझ में नहीं आया तो और किसी तरीके से समझाऊंगा. But I believe this is the way we can absolutely. Now when you sit and eat the food, that itself becomes your path of spirituality. Now you think about that. Arey acha, this is what he said. Okay, so this is what I said. Okay, so where am I right now? मैं कौन सी स्थिति में हूं? मैं तो कहता हूं आपके जीवन में ना, आप स्पिरिचुअलिटी बनने की जरूरत नहीं. आपके अंदर इतने कूट के भर देंगे, आप उसके अलावा किसी चीज लायक ही नहीं रहोगे. Okay. All that you will do will only in that realm only. So Deepika ji, hopefully I was able to answer your question. Yes, Mahadev, yes. Thank you. I just had this question in my mind since long time, but probably I was not able to put it right way. The Today hunger when I was not saw enough. that, So the hunger was not enough. Today it was. yeah, yeah, probably. When I saw that picture, that's when I wanted to ask it. Can you see that picture you saw became actually the pathway for knowing this? Yes, Mahadev, yes. So you should be thankful to that also. Yeah. Okay. Thank you so much, Dhanyavad. Mahadev. Dhanyavad, Thank you. Deepika ji. Thank you, Haryana. So सुधा जी कहाँ गए? Okay, yeah, सुधा जी. अभी कोई क्वेश्चन बाकी है? So if that, I will take it the last one. नहीं गुरुदेव, कोई क्वेश्चन बाकी नहीं. अब घड़े टूटने का इंतजार करते हैं. और हम डंडा लेके खड़े हैं. बस वही इंतजार कर रहे हैं कब घड़ा टूटेगा. वही तो हम कर रहे हैं. Like every time you think that I am making you, no, I am actually breaking you. आपको ज्यादा पता है क्या करना है, ब्रेक करना है कि मेक करना है. हम लोगों को थोड़ी पता है. सुधा जी, किसी ने पूछा कि आप कैसे देवता हो? मैंने कहा हम स्मशान के देवता हैं.
बोले ऐसा क्यों कहते हो? मैं बोला देखो, मंदिर जाओ ना जाओ, वहां आना पड़ेगा। इसमें और कोई डाउट नहीं। हाँ। और मंदिर जाके वापस आ सकते हो, हमारे पास आओ वापस नहीं जाओगे। इसलिए हम मंदिर वाले नहीं है, हम स्मशान वाले हैं। ठीक है, भोले बाबा शमशान में ही बैठते हैं ना गुरुजी। ये देखो, धन्यवाद। ये देखो, हमारे किंडरगार्टन लास्ट में रहते हैं हमेशा, कहते बड़े बड़ों की छक्के छोड़ने के लिए हम लास्ट में आएंगे। नहीं गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम बाबा जी। इतना सब कुछ नहीं है, मुझे थोड़ा सा एक अभी दीपिका जी वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा डाउट, मैं जरा सा पूछ लूं। चलो पूछ लीजिए। जब ये आपने बोला कि बहुत सारी मिठाई हो जाती है, फिर आप क्या करते हो उसको? फिर हम बांटते हैं उसको, है ना? तो गुरुजी हमारा मन तो बहुत होता है कि हाँ बांट दें, बट अगर कोई लेने वाला ना मिले फिर क्या करें? फिर क्या करते हो? अगर कोई लेने वाला नहीं है तो मिठाई का क्या करते हो? मुझे तो समझ नहीं आती कि मैं क्या करूं ओके, उसका। चलो अब एक बता देता हूँ। जब आपके घर में मिठाई बढ़ जाती है ना, हाँ। तो खाने वाले मिल ही जाएंगे, शायद आपको 2 दिन इंतजार करना पड़े, लेकिन मिलेंगे जरूर आभा जी। देखो एक चीज बताता हूँ, हम ना उसको बांटने का लिमिटेशन कर देते हैं। हमें लगता है कि हमारे आस पड़ोस में जो है उन्हीं को देना चाहिए, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि दुनिया में इतने भूखे लोग हैं जिनको उसकी जरूरत है? नहीं, मैं उसको पूरा बांटना चाहती हूँ, दिल से बांटना चाहती हूँ, पूरा का पूरा बांट देना चाहती हूँ। ओके। बट कभी सिचुएशन ऐसी होती है कि वो, इवन मैं अपनी बात थोड़ा खुल के बता देती हूँ, ठीक हाँ है? हाँ बिल्कुल बता, चलो। नहीं, मैं ऐसे कह रही हूँ कि अगर जैसे कुछ स्पिरिचुअलिटी में कुछ नया सीखते हैं, है ना, तो जब हम उसको किसी के साथ डिस्कस ना करें, किसी के साथ शेयर ना करें, तो वो हमारा रिवीजन उस हिसाब से नहीं हो पाता जैसा कि हम चाहते हैं। ओके। ठीक है, तो उसको मुझे किसी के साथ डिस्कस करना होता है, या मुझे किसी के साथ शेयर करें, और वो भी ऐसे बंदे के साथ जो उस लेवल का हो, जो मेरी बात को वैसे ही समझ सके। ओके। जैसे कि मैं उसको बोलना चाहती हूँ, जैसे कि वो इस भाव से चल रहा है। तो अगर कोई बंदा ऐसे डिस्कशन के लिए ना मिले, तो मेरा तो वो वर्क ही नहीं हो पाता है, आगे बढ़ ही नहीं पाता है। और अगर मिलते भी है, आजकल गुरुजी धर्म की चर्चा बहुत कम लोग करना चाहते हैं, कोई पसंद नहीं करता ज्यादा ये सब बात। बहुत रेयर में मिलते हैं कि जो जहाँ से मेंटल लेवल मैच कर रहा है और मेरी बात को वो एज समझ पाए जैसा कि मैं उनसे बोलना चाहती हूँ। तो आजकल बहुत रेयर में मिलते हैं। फिर मेरा यही क्वेश्चन है कि अगर ना मिले, फिर मैं वो जो भरा हुआ है ना, जो इतनी सारी मिठाई रखी है, जो भरा हाँ, भर क्या है, उसका करना क्या उसका? करूं? क्या हाँ, करना उसका? उसको आपके प्रभु जी के चरण में चढ़ा दो, बोलो कि भाई आई डोंट नो व्हाट टू डू विथ इट नाउ, ये भी तू संभाले। और अच्छी बात आभा जी ये है कि यहाँ पे तो इतने हैं अभी भी बैठे हुए इस ग्रुप में, किसी से भी बात कर लो, ये आपकी बातें समझ ही जाएंगे। और सब तो बड़ा खुश होते हैं कि जब आप आते हो। नहीं गुरुजी, ये तो अलग चीज है। ग्रुप में इतने लोग और इतने काम करने वाले हैं, मैं हर समय हर किसी को डिस्टर्ब नहीं कर सकती। अच्छा, कुछ लोग हैं, देखो उषा जी बोले मुझे क्या करो, मैं तो फ्री हूँ, देखो वो बोल भी रहे हैं। तो थोड़ा सा हो सकता है कि मुझे लगता है किसी की लैंग्वेज प्रॉब्लम हो, मुझे किसी को ना समझ आए, या मुझे ना कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। अगर जिसको प्रॉब्लम है, ये फैमिली है, वो बोल देंगे भाई ये मेरे को प्रॉब्लम हुआ। तो गुरुजी बस यही है, यहाँ पे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। अब आपको आभा जी मैं बताना चाहता हूँ जी। यहाँ पे देखिए, सुमा जी, दीपिका जी, लक्ष्मी जी, और इनके जो भी पूरे फैमिली मेंबर्स हैं ना, सरोजिनी जी, इनको किसी को मेरा लैंग्वेज समझ में नहीं आता है। जी। ये क्या करते हैं जानते हो? मेरा सेशन खत्म होने के बाद इनका सेशन शुरू होता है उनके लैंग्वेज में। दे स्टार्ट इन देयर ओन लैंग्वेज एंड स्टार्ट डिस्कसिंग एवरीथिंग अगेन। लेकिन एक हेजिटेशन होती है गुरुजी, मैं ऑनेस्टली बताती हूँ। इसीलिए हम आ जाते हैं ना वेडनेसडे के वेडनेसडे। हाँ, वो फिर आपका भी एक टाइम लिमिट है। मैं तो अपने एरिया, बिल्कुल अपने नहीं, आसपास आपको मेरे साथ रात भर बात करना है, मैं अभी बैठता हूँ, इन सबको भगा देते हैं।
अरे गुरुजी लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जाएगा कोई नहीं, ये प्रॉब्लम हो जाएगा। नहीं, मैं आपको इतना परेशान भी नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे इतने हाई फाई क्वेश्चंस नहीं होते जिसके लिए मैं आपको बिठा के रखूं। नहीं, इतना सब नहीं है, और मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं तो मैं तो बस बोल देती हूँ जो भी है। आवा जी, एक चीज जो मैंने बताया कि मिठाई जब घर में भर जाता है, राइट? जी जी। कभी कभी अक्सर मैंने ये देखा है कि मेरे घर में मिठाइयाँ तभी भर जाती हैं जब मेरे हाथ से किसी को जाना होता है। याद है ना वो 500 रुपए वाली कहानी जो बोली अभी मैंने? जी जी जी। हाँ। तो जिसने दिया है ना, उसने रास्ता भी निकालना है, वो रास्ता निकाल के देगा। और इतनी सुंदर चीज है। और आपने कहा कि आजकल कोई सुनता नहीं है कि, राइट, हीरा हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। हाँ, ये बात भी है। हाँ? और गुरुजी, अगर मैं किसी को बोलूं भी कि जैसे मैंने आज आपसे जो स्टोरी सुनी, मैं शेयर करना चाहती हूँ, तो मैं अपने बच्चों से तो बात करती हूँ कि हाँ उनको उतना टाइम है तो वो सुन सकते हैं, बट मुझे तो कोई रूबरू चाहिए बैठने के लिए। एक काम करो, कल से कृष्ण जी को बिठा दो सामने, बोलो तुम तो बैठो मेरे सामने, मेरा भी, मैं तुमसे ही बात करना चाहता हूँ। वो तो सब बैठते हैं, लेकिन मुझे लगता है ये तो सब जानते हैं, इन्हें क्या सुनाना, इन्हें तो सब कुछ पता ही है, इनको तो कुछ सुना ही नहीं सकती ना, इन्हें क्या नहीं सुनाऊं? नहीं नहीं नहीं, देखो, फिर उसको बोल देना तू ऐसा बैठ जैसे कुछ भी नहीं जानता तू। नाउ लिसन टू मी व्हाट आई एम गोइंग टू से, लर्न। हाँ, वो मुझे लगता है शायद मेरा ही एक रीजन है कि जो मैं ही चाहती हूँ कि हाँ मेरा रिवीजन हो जाए, तो मुझे कोई ऐसा बंदा मिले जिसके साथ मैं डिस्कस कर सकूं, कि मैं अपनी बात को, और वो भी मुझे क्रॉस क्वेश्चन करके पूछे, या वो चलो, मेरी बात से संतुष्ट नहीं है तो मेरे तो साथ आभा बोले। जी, एक एक आशीर्वाद चाहते हो ना कि कोई ऐसा मिले? यस जाओ, यस यस। जाओ। फाइनली कोई ऐसा मिले जो, जाओ, मिल जाएगा, जाओ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू गुरुजी। नहीं तो फिर अगले बुधवार देखे, को ये फिर बच्चे इनको कहते हैं जो बिना लिए छोड़ते नहीं है। तो बस ठीक है गुरुजी, और क्या, नहीं तो फिर अगले बुधवार को फिर मैं आपको परेशान करूंगी ऐसे ही। हाँ बिल्कुल, आप तब तक परेशान करो जब तक नहीं मिलता, ताकि मैं भी बोलूं अरे भाई मैं पीछा छोड़ू, मैं किसी को भेज ही तू बस। ठीक है गुरुजी, अच्छा लगा है, और मुझे बस यही एक डाउट था, मैं पूछ तो देखा, रही थी। अब कौन पूछ रहा था सवाल स्टार्टिंग में कि कैसा, हाउ डू यू सरेंडर? ये सरेंडर नहीं करते, ये उसको भी खींच के लेके आ जाते। शी पुल्स इट डाउन, नाउ यू टेल मी व्हाट टू डू। गुरुजी धन्य हो आभा जी। हाँ, प्रणाम गुरुजी। बस ज्यादा कुछ नहीं पूछना है, हाँ थोड़ा बहुत तो चलता है। ठीक है, चलो, प्रणाम गुरुजी, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आभा जी। थैंक यू थैंक गुरुजी। यू, थैंक यू। थैंक यू हरि भाई। बस थैंक यू भाई। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सुधा दीदी, थैंक ये यू देखो, सभी को, वंस अगेन थैंक यू। चलो, सो धन्यवाद, and thank you everyone for this. Again, I don't know how was this session was, but it was good. Like everything that we discussed actually covered up so many aspects of life again. सारे चीजों को। लेकिन अभी अगर पूछूं क्या क्या सुने प्रीति जी, बोले सुने तो बहुत कुछ, याद कुछ भी नहीं। फिर क्या करना? ओके, आई विल गो बैक एंड रिव्यू द वीडियो अगेन। But whatever it is, so thank you for being here, because again, as I say, it's your presence that brings these things out. आपके सवाल ही हैं जो इतने सुंदर उत्तर निकाल के लाते हैं। तो बिल्कुल तब तक, जब तक वो मटका ना फट जाए कंप्लीटली, तब तक पूछते रहिए। और मैं भी आते रहूंगा वो डंडे लेके, थोड़ा 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 उसको, लाइक आई विल बी कीप ऑन टैपिंग इट सो दैट you don't feel the pain when it breaks. तब तक आदत पड़ गई होगी टूटने की, तो धीरे धीरे धीरे, but this time that breaking will be your true realization of your maker. Okay, so धन्यवाद आप सभी का for your time and burning your late night oil and the oil of your day. Thank you so much. See you on Sunday. तब तक
keep doing the 1 minute meditations. जो कर रहा है, जो नहीं कर रहा, वो पता चल जाएगा. ठीक है, एग्जाम्स होने वाले हैं.